अबे यार इतने भी सब Yes, hello. Okay. So, good evening, everyone. YouTube live, Insta live. Okay. आज यूरोप की पॉलिसी है, तो हम पॉलिसी के लिए लाइव कर रहे हैं। अब पॉलिसी में एनालिसिस कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग की बात तो हम करने ही वाले हैं, बिकॉज वी आर हियर फॉर ट्रेडिंग। बट पॉलिसी का एनालिसिस कैसे करना है, तो 645, यस धर्मेश भाई, गुड इवनिंग। 645 को यूरोप की सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया है। कहां पे देखते हैं हम इंटरेस्ट रेट का डिसीजन? सो आई शेयर माय स्क्रीन विथ यू। आपको जाना है इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर में 645 को डिसीजन है, इंटरेस्ट ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन। 2.9% था इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेशन था 2.65% होगा, यानी कि एक इंटरेस्ट रेट कट आएगा 0.25% का, और एक कट आया है, यानी कि एक्चुअल डिसीजन आया है 2.65%, यानी कि एक कट हुआ है 0.25% का। ठीक है, तो इट इज एज पर दी एक्सपेक्टेशन। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो चुका है, 7:15 को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस चेक करेंगे अभी। तो आपको यूट्यूब में जाना है, किसी को कैसे देखना है वो समझने के लिए बोल रहा हूँ। यूट्यूब में जाएंगे तो वहां पर मिलेगा ECB, उसकी चैनल है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यहां पर आपको दिख रहा है सबसे पहले गवर्निंग काउंसिल प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 मार्च। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू होगी। ओके, तो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है, यस, तो गवर्नर अप्रोच कर रही है। गवर्नर का नाम क्या है? यूरोप की जो गवर्नर है क्रिस्टीन लगार्ड। क्रिस्टीन लगार्ड इज द नेम ऑफ द गवर्नर। ठीक है, स्क्रीन देखा है? यस। ओके, नरेश भाई गुड इवनिंग। यस, निकुंज भाई गुड इवनिंग। नरेश भाई स्क्रीन विजिबल होवी જોઈએ, मैं शेयर करेली છે। धर्मेश भाई स्क्रीन शेयर किया हुआ है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका। ओके ओके, ठीक है, अभी दिख रहा है सबको स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, ओनली क्वेश्चन इज कि, हाँ अभी एक ही सवाल है मेरा कि आपको जब मैं स्क्रीन चालू कर रहा हूं तो आपको वहां पर जो बोल रहे हैं उसकी आवाज आ रही है नहीं, सिर्फ वो बताओ, साउंड आ रहा है कि नहीं, सिर्फ वो बताओ। Good afternoon and welcome to our press conference with President Lagarde and Vice President de Guindos. My name is Wolfgang Preußel. Okay, as always, we have participants via video. If you ask questions, please unmute and put on your camera. And with that, I hand over to President Lagarde, please. Thank you very much. And good afternoon to all of you. The Vice President and I welcome you to our press conference. The Governing Council today decided to lower the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. इसका एनालिसिस कैसे करना है? In particular, एनालिसिस कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम बीच-बीच में पॉज करेंगे और वो जो बोल रही हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट है सब जानते हैं कि हमको क्या ढूंढना होता है इसके अंदर, पॉलिसी के अंदर या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। हमको ढूंढना होता है उनका टोन, कि वो क्या टोन में बोल रहे हैं। और टोन 2 तरीके का होता है, हॉकिश और डविश। तो हम ट्राई करेंगे कि हम जाने कि हॉकिश टोन क्या है और डविश टोन कैसे उसको एनालाइज करते हैं, कैसे पकड़ते हैं उसको।
और दूसरा हॉकी स्टोन का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ बात करना, पॉजिटिव बातें करना, इकोनॉमी के फेवर में बातें करना। डोव स्टोन है मतलब अपने कहीं नबड़ी बात हो, सो डोव स्टोन मतलब कि डीली बात करना, यानी कि अभी अच्छी हालत नहीं है, थोड़ी तकलीफ है, नीचे जा सकता ही है, वो है डोव स्टोन। ठीक है, तो हम पकड़ने की कोशिश करेंगे कि वो हॉकी स्टोन ज्यादा यूज कर रहे हैं या डोव स्टोन। यस, सो विल स्टार्ट। Decision to lower the deposit facility rate, the rate through which उनका जो we steer स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो पहले उनका स्टेटमेंट सुनेंगे, उसमें मैं नोट करते रहूंगा, बाद में आपको पॉज करके समझाऊंगा। the monetary policy stance is based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. The disinflation process is well on track. Inflation has continued to develop broadly as staff expected, and the latest projections closely align with the previous inflation outlook. Staff now see headline inflation averaging 2.3% in 25, 1.9% in 26, and 2% in 27. The upward revision in headline inflation for 25 reflects stronger energy price dynamics. For inflation excluding energy and food, staff project an average of 2.2% in 25, 2% in 26, and 1.9% in 27. Most अभी देखो यहाँ पर एक चीज बोली है इन्होंने, क्या बोली है कि अपवर्ड रिवीजन क्या है इन्फ्लेशन में। पहले बोला कि डिसइंफ्लेशन प्रोसेस इज ऑन ट्रैक, उसके बाद बोला है कि एज पर प्रीवियस आउटलुक है, लेकिन उसके बाद बोला है अपवर्ड रिवीजन फॉर 2025 इन्फ्लेशन। अपवर्ड रिवीजन मतलब कि इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ रहेगा 2025 में, जो पहले एक्सपेक्टेशन था उससे। तो ये एक स्टेटमेंट जो है उसे हम हॉकी स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। measures of underlying inflation suggest that inflation will settle at around our 2% medium-term target on a sustained basis. Domestic inflation remains high, mostly because wages and prices in certain sectors are still adjusting to the past inflation surge with a substantial delay. But wage growth is moderating as expected. डोमेस्टिक इन्फ्लेशन विल रिमेन हाई। ठीक है, तो इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा, ये वर्ड यूज किया है इन्होंने, व्हिच इज अगेन अ हॉकी स्टेटमेंट। Expected, and profits are partially buffering the impact on inflation. Our monetary policy is becoming meaningfully less restrictive, as our interest rate cuts are making new borrowing less expensive for firms and households, and loan growth is picking up. At the same time, a headwind to the easing of financing conditions comes from past interest rate hikes still transmitting to the stock of credit, and lending remains subdued overall. The economy faces continued challenges, and staff have again marked down their growth projections to 0.9% for 25, 1.2% for 26, and 1.3% for 27. The downward revisions for 25 and 26 reflect lower exports and ongoing weakness in investment. In ग्रोथ प्रोजेक्शन को डाउनवर्ड रिवाइज किया है, बोल रहा है कि ग्रोथ प्रोजेक्शन में हमने डाउनवर्ड रिवीजन देखा है, मतलब कि नीचे की तरफ, मतलब कि ग्रोथ कम होगा। ग्रोथ कम होना नेगेटिव है, तो वो एक स्टेटमेंट हो गया डोविश स्टेटमेंट। ठीक है, in part originating from high trade policy uncertainty as well as broader policy uncertainty. Rising real incomes and the gradually fading effects of our past rate hikes remain the key drivers underpinning the expected pickup in demand over time. We are determined to ensure that inflation stabilizes sustainably at our 2% medium-term target. Especially in current conditions of rising uncertainty, we will follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach
to determining the appropriate monetary policy stance. In particular, our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are not pre-committing to a particular rate path. The decisions taken today are set out in a press release available on our website. एक सेंटेंस यहाँ पे इन्होंने बोला है वी आर नॉट प्री कमिटिंग टू एनी रेट पाथ। अब नॉर्मली इसका मतलब ये है कि हम कोई भी एक डायरेक्शन की तरफ आगे नहीं, मतलब क्लियरली नहीं बोल रहे हैं कि हम या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या कम करेंगे। काफी टाइम से ये लोग यही बोलते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अब तक जो ट्रेंड है या अब तक जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ का है। इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं कंटिन्यूसली पिछले कुछ महीनों से, ठीक है, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि प्री कमिट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आगे जाते हुए नीचे की तरफ ही जाएंगे ये जरूरी नहीं है, ऊपर की तरफ जाएंगे या नहीं वो नहीं पता। Right. And I will now outline in more detail how we see the economy and inflation developing, and will then explain our assessment of financial and monetary conditions. So looking at the economic activity, the euro area economy likely grew modestly in the fourth quarter of 2024. The first 2 months of 25 saw a continuation of many of last year's patterns. Manufacturing is still a drag on growth, even if survey indicators are improving. High uncertainty, both at home and abroad, is holding back investment, and competitiveness challenges are weighing on exports. At the same time, services are resilient. Moreover, rising household incomes and the robust labor market are supporting a gradual pickup in consumption, although consumers' confidence is still fragile and saving rates are still high. The unemployment rates stayed at its historic. मैन्युफैक्चरिंग जो वीक है और एक्सपोर्ट्स भी वीक रहेंगे और रह रहे हैं, मतलब अभी, और सर्विसेज का स्टेटस जो है वो अच्छा है, सर्विस सेक्टर अच्छा कर रहा है। Low of 6.2% in January, and employment is estimated to have grown by 0.1% in the last quarter of 24. एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ा है। However, demand for labor has moderated, and recent survey data suggests that employment growth was subdued in the first 2 months of 25. इस महीने के पहले 2 महीने में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ अच्छा नहीं है। Uncertainty has increased and is likely to weigh on investment and export by more than previously expected. अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, इसका मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इशारा कर रही है कि अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, क्योंकि ट्रंप आ गया है तो वो बार-बार टैरिफ की बातें करता है, तो अनिश्चितता बढ़ गई है थोड़ी। But growth should be supported by higher incomes and lower borrowing costs. According to the staff projections, export should also be supported by rising global demand so long as trade tensions do not escalate further. Fiscal and structural policies should make the economy more productive, competitive, and resilient. The European अनसर्टेनिटी है, लेकिन फिर भी टेंशन नहीं है, उनको लग रहा है कि आगे जाते हुए ग्रोथ और बाकी सब चीजों की वजह से सपोर्ट बना रहेगा। Commission's Competitiveness Compass provides a concrete roadmap for action, and its proposal should be swiftly adopted. Governments should ensure sustainable public finances in line with the EU's economic governance framework and prioritize essential growth-enhancing structural reforms and strategic investment. Looking now at inflation. Annual inflation stood at 2.4% in February, after 2.5% in January and 2.4% in December, according to Eurostat's flash estimate. Energy price inflation slowed to 0.2%, following a strong increase to 1.9% in January from 0.1% in December. By contrast,
food price inflation rose to 2.7% from 2.3% in January and 2.6% in December. Goods inflation ticked up to 0.6%, while services inflation eased to 3.7% from 3.9% in January and 4% in December. Most indicators of underlying inflation are pointing to a sustained return of inflation to our 2% medium-term target. Domestic inflation, which closely tracks services inflation, declined in January, but it remains high, as wages and some services prices are still adjusting to the past inflation surge with a substantial delay. At the same time, recent wage negotiations point to a continued moderation in labor cost pressures. The assumption of higher energy price inflation led staff to revise up the headline inflation projection for 25. At the same time, staff expect core inflation to continue slowing as labor cost pressures ease further and the past monetary policy tightening continues to weigh on prices. कोर इन्फ्लेशन अभी भी नीचे जा रहा है ऐसा बोल रही हैं और कोई भी कंट्री में इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो वो नीचे जा रहा है ऐसा बोल रही हैं इसका मतलब कि वो स्टेटमेंट जो है वो डविश है. Most measures of longer-term inflation expectations continue to stand at around 2%. All of these factors will support the sustainable return of inflation to our target. बार-बार एक सेंटेंस यूज करिए कि इन्फ्लेशन हमारे टारगेट पे वापस आएगा 2% पे वापस आएगा. ठीक है, ये स्टेटमेंट कंटिन्यू. Risk. The risks to economic growth remain tilted to the downside. इकोनॉमिक ग्रोथ का रिस्क जो है वो नीचे की तरफ टिल्टेड है, डाउनसाइड है, मतलब कि नेगेटिव बात है ये बात है डोविश. An escalation in trade tensions would lower euro area growth by dampening exports and weakening the global economy. Ongoing uncertainty about global trade policies could drag investment down. Geopolitical अभी जो पॉलिसी चल रही है वो इन्वेस्टमेंट को भी नीचे लेके जा सकती है, वो भी डोविश टोन है. tensions such as Russia's unjustified war against Ukraine and the tragic conflict in the Middle East remain a major source of uncertainty as well. Growth could be lower if the lagged effect of monetary policy tightening lasts longer than expected. At the same time, growth could be higher if easier financing conditions and falling inflation allow domestic consumption and investment to rebound faster. An increase in defense, in infrastructure spending, could also add to growth. Increasing friction in global trade is adding more uncertainty to the outlook for euro area inflation. A general escalation in trade tensions could see the euro depreciate and import costs rise, which would put upward pressure on inflation. At the same ग्लोबल टेंशन बढ़ते हैं तो यूरो वीक होगा और यूरो वीक होगा तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेंगी और इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा. time, lower demand for euro area exports as a result of higher tariffs and a rerouting of exports into the euro area from countries with overcapacity would put downward pressure on inflation. Geopolitical tensions create two-sided inflation risks as regards energy markets, consumer confidence, and business investment. Extreme weather events and the unfolding climate crisis more broadly could drive up food prices by more than expected. Inflation could turn out higher if wages or profits increase by more than expected. A boost in defense and infrastructure spending could also raise inflation through its effect on aggregate demand. But inflation might surprise on the downside if monetary policy dampens demand by more than expected. Let's look at the अलग-अलग सिनेरियो बताएं कि ऐसा होगा तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, ऐसा होगा तो नीचे जाएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. financial and monetary conditions now.
Market interest rates in the euro area decreased after our January meeting, but have risen over recent days in response to a revised outlook for fiscal policy. Our interest rate cuts are gradually making it less expensive for firms and households to borrow, and loan growth is picking up. At the same time, a headwind to the easing of financing conditions comes from past interest rate hikes still transmitting to the stock of credit, and lending remains overall subdued. The average interest rate on new loans to firms declined to 4.2% in January from 4.4% in December. Declined to 4.2% on new loans to firms declined to 4.2% in January from 4.4% in December. By contrast, firms' cost of issuing market-based debt rose to 3.7%, 0.2 percentage point above its December level. Over the same period, the average interest rates on new mortgages. Growth in bank lending to firms rose to 2% in January, up from 1.7% in December, on the back of a moderate monthly flow of new loans. Growth in debt securities issued by firms. Mortgage lending continued to rise gradually, but remained muted overall, with an annual growth rate of 1.3%. So in conclusion, the Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. In particular, the decision to lower the deposit facility rate through which we steer the monetary policy stance, is based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamic of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are determined to ensure that inflation stabilizes sustainably at our 2% medium-term target. Especially in current conditions of rising uncertainty, we will follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate monetary policy stance. In particular, our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are not pre-committing to a particular rate path. In any case, we stand ready to adjust all of our instruments within our mandate to ensure that inflation stabilizes sustainably at our medium-term target and to preserve the smooth functioning of monetary policy transmission. We are now ready to take your questions. Thank you. And the first question today goes to Alex Weber of Bloomberg. Alex, please. Let me grab some water. Thank you. Good afternoon. My first question is on the way forward. So you say that your monetary policy is becoming meaningfully less restrictive. Does this mean you could slow the pace of rate cuts now and perhaps pause in April? Did you discuss such a scenario at your meeting today? And my second question, perhaps related to that, is on fiscal policy. There's a pretty drastic shift on the way with plans for much higher defense spending, and in Germany's case, also infrastructure. There's been a significant market reaction as well. Could you elaborate how the Governing Council expects this to change the economic outlook and monetary policy? Thank you very much for your two questions. So on your first question, you very well noted that we have changed the wording of the fourth paragraph of our monetary policy statement. So let me try to explain what it means, because it's not just an innocuous little change. It's a change that has a certain meaning. What we had previously was that we would keep our restrictive monetary policy as long as was necessary, etc. And that was very much a static assessment of what was needed. We are now moving
by having our monetary policy is becoming meaningfully less restrictive to a more evolutionary approach. So in other words, we take account of the journey that we have traveled, 150 basis points since we started cutting. And we acknowledge the fact that as a result, it is becoming meaningfully less restrictive. We add to that in the same paragraph the two forces that we are seeing operating on our financing conditions. And the first one, if you will, is I used a comparison a few weeks ago when we were at the G20 in South Africa, and I used a comparison of the Cape of Good Hope, where you have warm water from the Indian Ocean and the cold water from the Atlantic. And this is really where the position is at the moment, where we have the impact of the current monetary policy decisions that we take and have been taking. वो ये बता रही है कि अब तक हम हर बार एक पैराग्राफ यूज करते थे। सवाल पूछा था कि क्या आपने डिस्कस किया कि आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, तो उन्होंने बोला कि अब तक हमने एक पैराग्राफ यूज किया था, आपने पढ़ा हो तो, जानबूझकर हमने वो चेंज किया है। पहले हम ये बोलते थे कि आगे जब तक जरूरत पड़ेगी हम पॉलिसी को रिस्ट्रिक्टिव रखेंगे, मतलब कि लोगों के पास पैसा कम जाए वैसी पॉलिसी रखेंगे। यानी रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि टाइटन रखेंगे फाइनेंशियल कंडीशन को। अब हम ये बोल रहे हैं कि अभी पॉलिसी कम रिस्ट्रिक्टिव है, इसका मतलब कि अभी पॉलिसी ऐसे जोन में है जहां पर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, यानी कि अभी फाइनेंशियल कंडीशंस टाइट नहीं है ये इंटरेस्ट रेट कट के बाद या अराउंड जिस लेवल पे हम हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी का जो लेवल है वो ऐसा लेवल है जहां पर स्टेबिलिटी आ सकती है, यानी कि आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट कट कम हो सकते हैं। ये क्लियरली डायरेक्टली एक तरीके से देखने जाओ तो ये हॉकिश स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट वहां पर रहने का पॉसिबिलिटी बढ़ गया है, which is to cut rates. But at the same time, we have been taking, which is to cut rate. Decision is at the moment where we have the impact of the current monetary policy decisions that we take and have been taking, which is to cut rates. But at the same time, we still have the cold water of the Atlantic, meaning the remaining effects of decisions that we have taken over the course of time. And that's really where we are at the moment. And that has led us to acknowledge the fact that our measures, that our monetary policy is becoming meaningfully less restrictive. So you asked me the second question, which has to do with most recent development. And I have to say that we have not been spared recent developments in the last few hours and days. And the one that you're referring to is the announcement by the European Commission, on the one hand, of this 800 billion comprising the 150 borrowing facility and the 650 space within which member states can borrow for defense purposes, on the one hand. And on the other hand, the announcement by the German authorities of a twofold program, in a way, one which is the big infrastructure financing of 500 billion over a period of 10 years, and a special measure that relates to defense expenditure that would be decided in the years to come. So two observations. One is, this is work in progress. And we have to be attentive, vigilant. We have to understand how this is going to work, what the timing will be, what the financing will be, so that we can then draw the conclusions and appreciate how much it will contribute to growth and what impact it would have eventually on inflation. So that part of the work we have not yet, of course, determined the conclusion. But one thing that around the table of the Governing Council was clear is that on both accounts, that would be supportive to European growth at large and would be a boost to the European economy. Now, everything is going to be a factor of the details. You know, where will the purchases take place? What will the timing be? What will the financing be? And all of those are, you know, obviously political decisions that are not within the remit of the central bank. But we are
very attentive to what will come out of today's meeting in Brussels and further development on the German political scene to appreciate the economic consequences. Thank you. Next question goes to Annette Weisbach of CNBC. Annette, please. Madam अब तक Lagarde, have मार्केट में another. से पैसा निकालने की बातें होती थी क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। अब मार्केट में पैसा डालने की भी बातें होने लगी है धीरे धीरे, यानी कि यहाँ पे पैसा और डाल भी सकते हैं ये लोग बोल रहे हैं कि अभी का जो सिनारियो है वो ऐसा है जहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी लेस रिस्ट्रिक्टिव, और बार बार उन्होंने जिक्र किया है कि ग्रोथ जो है वो वीक रह सकता है, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए करना चाहिए कुछ, और जर्मनी ने वही करने की कोशिश की है पिछले कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में। कल हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि जर्मनी जो है वो बजट स्पेंडिंग बढ़ाने वाला है, बढ़ाने का प्रपोज कर रहा है। 500 बिलियन यूरोस उनको ज्यादा स्पेंड करने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के ऊपर, और अगर ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ग्रोथ भी बढ़ सकता है, तो यूरो के लिए पॉजिटिव भी है, उसकी डिमांड भी बढ़ सकती है और उस वजह से उसके प्राइसेस भी अभी ऑलरेडी पिछले 2 दिन से बढ़ रहे हैं। Question on the meaningfully less restrictive monetary policy stance. Perhaps you can explain that to us. Lending is still down. So what makes you think, the ECB think that the monetary policy stance is actually less restrictive? Because it seems that companies are still holding back to actually borrow and invest. So my second question would be on the pause, which is likely or not in April. Given the uncertainties, would you to be stubbornly high? Thank you. Coming in as domestic inflation seems to be stubbornly high. Thank you. But thank you so much for your question. Our assessment based on the bank lending survey, based on the numbers that we receive, based on the corporate survey that we hold, and comparing the current situation with the last few quarters, and this month versus last month as well, indicate that lending is actually increasing. The lending to corporate is up by 2%. The lending to households in terms of mortgages is up by 1.3%. Now, this is not yet bringing us to, the sort of strong, solid, robust levels of borrowing by economic actors, but it is definitely on the way up. So you have two phenomena. You have interest rates that we see going down, both for corporate and households, not phenomenally yet. We hope that that process will continue. And we are seeing at the same time the volume of lending going up as well. So that's on those two accounts, which it's one of the elements that we use to determine whether or not and how much we are or not still restrictive. And we're not really sort of passing judgment, because I think that particular point is not necessarily the most relevant. What we acknowledge is that it is becoming meaningfully less restrictive. And as I said, we take into account all the work that has been done and we assess the process that we are in. You asked me a second question. Oh, okay. Yeah, that you know what? That gives me a chance to explain to you where we are. And I think there is a particular sentence in the monetary policy statement which refers to the particularly high uncertainty under which we operate. Because, clearly we have three phenomena that we have debated over the course of this Governing Council. One, the disinflation is on track. That's point number one. Point number two, the monetary policy is becoming meaningfully less restrictive. And point number two, we have huge uncertainty. Some people have used the adjective phenomenal uncertainty, and we debated as to whether it was high and rising. But suffice to say that it is all over. So we have risks all over, uncertainty all over. So under those circumstances, our determination is obviously to reach destination. But we will do so without pre-committing to any particular path.
And you have seen that sentence in our monetary policy statement in the past. I think it is even more relevant at the moment, given the level of uncertainty that we have. So we are not pre-committing to a path. And you might have some governors who will say that, I believe that it is their individual views. I can assure you that the collective view around the table is that we do not pre-commit to a path. And we will be, as ever, and probably more so, data dependent. That in order to reach destination, the appropriate monetary policy should be to cut. We shall do so. But if, on the other hand, the data indicates that it is not the case, then we shall not cut and we will pause. So that's really where we are, not pre-committing, being data dependent as ever, and deciding on a meeting by will find it frustrating, but I'm terribly sorry, or would not be very, very responsible. From one day to the other, the situation changes dramatically. Energy, you just name it. Risks are all over the place. Good afternoon, everybody. So, Good afternoon, Mr. Panetta. you said in the past that the direction of travel was clear, and the only question was about the pace and timing. There was also a mention in the past about inflation reaching target over the course of this year. Now, those are gone. You didn't repeat those today. So I just wanted to ask you, how broad was the consensus behind today's rate cut? The second question is about something else, is about Russian assets. There seem to be those assets. ओके सो सी अब मोटा मोटी डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. अब नए नए क्वेश्चंस आते रहेंगे, लेकिन मोटा मोटी क्वेश्चंस रिपीट लाइन पे आएंगे, तो जो चीजें डिस्कस हो चुकी है उसी के इर्द गिर्द आएंगे. इसका अगर समरी निकालना है तो मेरे हिसाब से समरी ये बनता है, बहुत सिंपल सा समरी है. ये बार बार एक सेंटेंस यूज किया है इन्होंने कि वी आर बिकमिंग मीनिंगफुली लेस रिस्ट्रिक्टिव. मीनिंगफुली लेस रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है? यहां तक अब तक रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि लोगों को पैसा लेने में संकोच हो रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं बोरो नहीं करना चाहिए, यानी कि मार्केट से लिक्विडिटी बाहर रह रही है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रहे हैं और इस वजह से इंटरेस्ट रेट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है. लेसर रिस्ट्रिक्टिव हम बन चुके हैं. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अभी लोगों को पैसा लेने में तकलीफ नहीं लग रही है, लोग ज्यादा पैसा लेंगे. और इन्होंने ये भी बोला है कि लोन ग्रोथ जो है वो बढ़ चुका है. अभी अगर लोन ग्रोथ बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है कि लोग पैसा उठाने लग गए मार्केट में, यानी कि बोरो करने लग गए. अगर मार्केट में लोग पैसा बोरो करेंगे, अगर बाकी सब लोग ग्रोथ, और इन्होंने ये भी बार बार रिपीट किया कि ग्रोथ वीक हो सकता है, वीक हो सकता है, मतलब कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए. देखो, एक होता है कि क्या बोल रहे हैं, दूसरा होता है कैसे बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, मैं बोल रहे हैं ग्रोथ वीक हो सकता है, लेकिन कैसे बोल रहे हैं, खुशी से बोल रहे हैं, ज्यादा दुख नहीं दिख रहा है इनकी आंखों में. मतलब कि ये लोग चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सपोर्ट करो, गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे, मतलब मार्केट में पैसा डालो. ये सिंपल सा फंडा दिख रहा है. लोग भी बोरो कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी पैसा डालें. अगर मार्केट में पैसा डालेंगे तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, तो चीजों की डिमांड बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और इसका मतलब ये है कि करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है या स्टेबलाइज हो सकती है. तो यूरो जो काफी टाइम से गिर रहा था, काफी टाइम से उसका सेल ऑन राइज का जो ट्रेड चल रहा था वो कंक्लूड हो चुका है, वो खत्म हो चुका है. अब जो ट्रेड रहेगा वो बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा, यानी कि प्राइस अगर नीचे जाता है तो आपको यूरो में बाय करना है. ये सिंपल सा ट्रेड इसे एनालाइज करके निकलता है. मतलब ये टोन जो है उसे मैं हॉकिश समझूंगा, और इसको मैं ये बोलूंगा कि यूरो को बाय किया जा सकता है, ऐसा ट्रेड दिखना चाहिए. अगर कोई भी ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, देखो मुझे नहीं पता कि यूरो की क्या सिचुएशन है अभी, मतलब आफ्टर पॉलिसी स्टार्टेड, पॉलिसी जब स्टार्ट हुई तब से मैं आपके साथ हूं, तो मुझे नहीं पता कि अभी मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि यूरो को बाय ऑन डिप्स मोड पे रखना चाहिए अभी. ठीक है, ये है मेरा कंक्लूजन. अब ये पॉलिसी आगे भी चल रही है, आगे चलती रहेगी, नए क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे, लेकिन जितने क्वेश्चन आंसर अब तक आ चुके हैं मोटा मोटी और जो बोल चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजरली समरी यहाँ पर यही बनती है. 70-80% डिस्कशन हो चुका है. अब कुछ नया पॉइंट अगर आ जाता है लास्ट के 20% में तो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ तक का कंक्लूजन यही है कि आपको यूरो को बाय ऑन डिप्स पे रखना चाहिए. ठीक है, अब मैं इसको वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ. मीनवाइल let us see other things as well. Now, obviously, that would set a legal precedent. So I wanted to ask you, how do you think that would affect? Of substantive discussion all around the table on the state of the economy, on our projections, on the risks that we are facing. And the decision was a consensus
different source of information. Could be. But I was sitting in the room, you see, mind you. So no one opposed the decision. One governor, specifically Governor Olsman, for whom I have great respect, abstained. Okay? There was no opposition. Look, on the Russian assets, I think this is as much. Good afternoon. I would like to go back to your previous assertion that there might be a question about the speed of travel, but the direction is clear. So from today's perspective, is the direction of travel still clear? There's only one direction. And my second question is on the recent market reaction. Borrowing costs have gone up in response to the fiscal news. Do you have any concerns about a return of sovereign debt tensions in the Eurozone? Thank you very much. Well, thank you very much. I think I have tried to explain in the previous answer to the question that the situation that we face at the moment is predicated by this disinflationary process that is on track and confirms broadly the estimates that staff has made over the course of time, and without much error, by the way, most recently. Second, that our monetary policy is meaningfully less restrictive. So we have covered 150 basis points of ground. And three, and that's probably the most important in relation to the question that you've pointed at me, the landscape that we have at the moment is clouded with uncertainty, okay? And more than ever before, it will require that we be vigilant. So all governors, all the national central banks, all the economies that are scrutinizing central banks, as well as at the ECB, each of them will continue to scrutinize, and we will all have to be extremely vigilant. We will have to be agile to respond to the data. That the most appropriate monetary policy stance is a cut, it will be a cut. If, on the other hand, the data indicates that the most appropriate decision is not to cut, then it will be a pause. I think I have been as clear as I could be on that one. You asked me a second question, which had to do with the markets. You know, we look at all market developments, and we are very attentive to what's happening, and we try to understand the reaction function of markets. And clearly, there has been a lot of reaction in the last, particularly in the last 12 hours, 24 hours, including yesterday. But we're not going to be changing a policy stance as a result of a market determination of very limited spread variation, despite the massive change in the yields. So I think that that gives us an answer concerning the solidity of transmission. And Olaf Storbeck of the Financial Times. Olaf, please. Thanks. Following up on the last question, so your answer is that the direction of travel isn't clear anymore. Would that be the kind of short version of your elaborate answer? That would be my first question. And my second question is, you pointed to the potential increase in infrastructure and defense spending, which could both add to growth and to inflation. Did you have any discussion in the Governing Council which of the two things are potentially the more relevant one looking forward and are planning to do? To move faster than light, and certainly faster than our brain power collect from yesterday and GDP. Intuitively, all of us around the table, the governors, believe that if all that works, and that's a big if, because it needs to then be implemented, by the way. If all that works, it will boost growth. But more to come. Frankly, I think that we need to be attentive to the coming days, weeks, and then try to anticipate the economic consequences that it would have. And the reason I'm giving you, I gave Mrs. Streck a quite elaborate answer, I'm sorry for that,
It's because the situation is not as sort of straightforward, black and white, we go here, we go there. No, it's not what we're facing at the moment, to any particular rate path. Okay? We will be data dependent. Be attentive to when we reach that. पॉलिसी से अभी यहाँ पर हम कंक्लूड कर रहे हैं इसको, आगे पॉलिसी भले चलती रहेगी, मोटा मोटी टोन जो है वो हॉकिश है मतलब कि यूरो को बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, यूरो नीचे जाए तो आप बाय करो। सो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस पॉलिसी का ये कहता है कि यूरो को यहाँ से बाय ऑन डिप्स का अप्रोच फॉलो करना चाहिए, नीचे जाए प्राइस तो बाय करना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हमारा सेंटिमेंटल एनालिसिस का सेकंड स्टेप जो हम यूजुअली फॉलो करते हैं, सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या बोलता है हमको, वो चेक कर लेते हैं। यूरो यूएसडी के लिए क्लियर है, 25 75 लोग शॉर्ट करके बैठे हैं तो हम बाय कर सकते हैं, राइट। सो हमारे ट्रेडिंग के दो क्वेश्चन, पहला सवाल क्या अभी ट्रेड करने का सही वक्त है, यस, द आंसर इज यस, ट्रेड करने का भी सही वक्त है, यूरो यूएसडी को बाय करेंगे। फंडामेंटल भी बोल रहा है, सेंटिमेंटल भी बोल रहा है। अब आता है दूसरा सवाल, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट क्या हो। अब चार्ट के ऊपर जाकर देखते हैं लेवल्स, जो कि आपका थर्ड स्टेप है टेक्निकल। ओके, सो पॉलिसी के बाद चार्ट के ऊपर रिएक्शन, एक हल्का सा पॉजिटिव रिएक्शन आ चुका है। पॉलिसी का टाइम था 6:45 का, सो 1.0794 वाज द प्राइस। तो वहां से देखेंगे तो 30 पिप प्राइस जो है वो ऊपर जा चुका है, ठीक है। और पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी यूरो अप ट्रेंड में है। डेली टाइम फ्रेम पे जा रहा हूं मैं, तो आप देखोगे तो 1.04 से स्टार्ट हुआ है मंडे को बढ़ना, 1.08 पे पहुंच चुका है, 400 450 पिप्स ऑलरेडी कवर कर चुका है ऊपर की तरफ। तो अभी आपको इसको थोड़ा कूल ऑफ होने देना पड़ेगा मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा वन साइडेड मूव आ चुका है, तो आपको बेटर एंट्री के लिए वेट करना पड़ेगा। बेटर एंट्री का लेवल कहां देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो लेवल बनता है वो पहला लेवल इधर बनता है 1.0775 के आसपास, 765 से लेकर 775, ये पहला एंट्री लेवल बनता है। और दूसरा एंट्री का लेवल बनता है 1.0688 के आसपास, जो कि यहाँ से ऑलरेडी 100 पिप नीचे है। तो यानी कि जो पहला लेवल बन रहा है वो भी यहाँ से 40 पिप नीचे है। तो ये इस लेवल पे एंटर करना थोड़ा ज्यादा रिस्की है, बहुत अग्रेसिव ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे तो वर्टिकल मूव चल रहा है यूरो में। डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो वर्टिकल मूव चल रहा है, 1 2 3 कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं ऊपर की तरफ, 400 पिप ज्यादा ट्रैवल हो चुका है मार्केट। ओके, तो थोड़ा वेट करना जरूरी है बेटर एंट्री के लिए। तो आई वुड रिकमेंड यू टू वेट फॉर बेटर एंट्री। कहां पे, 1.0775 765 ये पहली रेंज है, और दूसरा है 680 के आसपास समझ लो मोटा मोटी। तो आपका एवरेज बैठेगा 1.0735 के आसपास का इस ट्रेड का, और आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए 1.0617 का। अभी मैं सब चार्ट के ऊपर मार्क करूंगा, लेकिन मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ 6.610 भी चल सकता है, तो मोटा मोटा राउंड फिगर आप 1.600 ले लो, वो बेटर रहेगा। तो वहां पर बनेगा आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट। पहले मैं ऐसे ही मतलब अभी ओवरऑली आपको लेवल्स बता रहा हूँ, उसके बाद एग्जैक्ट लेवल्स पे चार्ट पे मार्क करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। और आपका टारगेट आएगा, फर्स्ट टारगेट आएगा आपका 1.0949 के आसपास, और सेकंड टारगेट 1.0999 के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से आपके लेवल्स बन रहे हैं, मैं अभी चार्ट के ऊपर मार्क कर रहा हूं। सो जल्दबाजी नहीं करिएगा एंट्री करने की, जल्दी कूदने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में आपको बेटर एंट्री मिले तो अभी घुसना, ऑलरेडी मार्केट मुंह दे चुका है, लेवल्स भी अभी डिस्टेंस में है। ट्रेड बनता है लॉन्ग का, ये क्लियर है, ठीक है। ट्रेड बाय का ही बनेगा, ये पक्की बात है, ट्रेड शॉर्ट का नहीं बनेगा। इसको हम एक मिनट, लॉन्ग ट्रेड लेना है हमको, तो मैं लॉन्ग ट्रेड पे जाता हूँ। लॉन्ग पोजीशन बनाना है। अब लॉन्ग पोजीशन यानी कि लेवल्स, चलो इसको हटा देता हूँ।
बेटर ये दिखाऊंगा मैं आपको, लेवल्स मार्क करके लिख के और लाइंस का यूज करके, तो वो बेटर रहेगा। ओके, दिस इज फर्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2। अग्रेसिव ट्रेडर है तो पहली जगह पे पूरी एंट्री ले लेंगे, ये एंट्री नंबर 2। और आपका स्टॉप लॉस आ रहा है मोटा मोटी यहाँ पे, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन थोड़ा और नीचे है यहाँ पे, लेकिन वो बहुत डीप हो जाएगा, तो यही बराबर है सपोर्ट, स्टॉप लॉस आपका यही बराबर है। तो 1.0600 स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1.070 के आसपास फर्स्ट एंट्री है, 1.0691 के आसपास दूसरी एंट्री है। लेवल्स आपको राइट साइड पे दिख रहे होंगे, चार्ट के राइट साइड पे 3 लेवल है, तीनों दिख रहे हैं, एंट्री 1, एंट्री 2 और स्टॉप लॉस। और टारगेट आपका आता है, ये आपका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा आपका हल्का सा नीचे, यहाँ रहेगा आपका सेकंड टारगेट, ठीक है। फर्स्ट टारगेट मिलेगा तो भी मेरे ख्याल से निकल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ा मूव आ चुका है, तो सेकंड टारगेट के लिए वेट करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ग्रीड हो जाएगा, बहुत ज्यादा लालच हो जाएगी। तो आई थिंक टारगेट जो है वो आपको पहला पकड़ के रखना चाहिए, दैट विल बी बेटर आई थिंक, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो टारगेट मैंने बताया वही पकड़ के रखेंगे, दूसरे टारगेट पे नहीं जाएंगे, ज्यादा अग्रेसिव ट्रेड हो जाएगा। अब इसको लिख लेता हूं, एंट्री 1, एंट्री 1 क्या है आपकी 1.0770, फिर एंट्री 2, एंट्री 2 है आपकी 1.0690 691, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस 1.0600। तो अभी आपकी दो एंट्री का एवरेज क्या बनेगा 1.0770 1.0691, यानी एवरेज बनेगा आपका 1.0740 4 नहीं 730 सॉरी 1.0730 के आसपास आपका एवरेज बनेगा, तो आपकी एंट्री वहां पर बैठेगी और आपका टारगेट जो है 1.0492 या 495 जो भी आप पकड़ लो, 1.0492 1.0942 सॉरी नॉट 492 942 सॉरी, ये सो आपका टारगेट बनेगा। सो आपका ट्रेड का समरी है ये आपकी ट्रेड की समरी, ठीक है। एंट्री 1.0770, एंट्री 2 1.0691, स्टॉप लॉस 1.0600 एंड टारगेट 1.0942। ये है आपका ट्रेड यूरो यूएसडी में। क्यों सिर्फ यूरो यूएसडी देख रहे हैं, क्योंकि ये यूरोप की ही पॉलिसी है, ओके। तो यूरोप की ही पॉलिसी है तो यूरो यूएसडी को ही देखेंगे। तो एंट्री करने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कूदना नहीं है मार्केट में। अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड क्या बनेगा, अगर आपका एवरेज बनता है एंट्री 1.0730, स्टॉप लॉस बनता है वहां से 130 पिप्स का और वहां से आपका टारगेट बनता है 210 पिप का, तो 130 पिप का स्टॉप लॉस 210 पिप का टारगेट, तो मोटा मोटी हो गया 1:1.5, ठीक है। तो जितना आप रिस्क ले रहे हो उससे 1.5 यानी कि 1.5 गुना आपको टारगेट मिल रहा है। इस तरह से बनता है आपका ट्रेड, राइट।
ओके हाँ, अभी चैट बॉक्स में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? सर इफ यू थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस इट, अदरवाइज दिस आस्क एन एवरेज क्वेश्चन डिस्क्राइब। हाँ ठीक है, मैंने पॉलिसी को कंक्लूड कर दिया है। Termin by saying sir it is overbought, need to let retrace first। yes, हमने वही बात की है। yes, यूरो को रिट्रेस करना पड़ेगा। tomorrow if is NFP, so once wait for euro to enter also। yes, कल NFP का डेटा है, नॉन फार्म पेरोल कल शेड्यूल्ड है, तो नॉन फार्म पेरोल कल होगा, वापस हम मिलेंगे लाइव में। कल वापस से मैं कोशिश करूंगा कि हम लाइव में मिल पाए। सो कल नॉन फार्म पेरोल है, नॉन फार्म पेरोल के टाइम पर मिलेंगे, तो वहां पर ऑटोमेटिक रिट्रेसमेंट आ गया होगा, तो डिस्कस कर लेंगे। Yes, Smith also saying tomorrow it's non-farm payroll, won't it affect trade? Okay, देखो नॉन फार्म पेरोल का डेटा है तो ट्रेड को अफेक्ट तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ज्यादा पावरफुल डेटा कौन सा है? ज्यादा पावरफुल डेटा होता है पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी सबसे ज्यादा पावरफुल है, नॉन फार्म पेरोल उसके बाद आता है। ठीक है, तो नॉन फार्म पेरोल जो है वो पूरा ट्रेड का डायरेक्शन रिवर्स कर दे उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। वो एक हवा का काम करता है, यानी कि आप अगर हवा बढ़ जाती है आपके सपोर्ट के डायरेक्शन में तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर हवा आपके अगेंस्ट में तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन हवा आपके पूरी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। वैसे नॉन फार्म पेरोल जो है वो इंटरेस्ट रेट के बेस पर जो फ्लक्चुएशन होता है उसको रिवर्स कर नहीं कर सकता, नॉर्मली उसको रिवर्स नहीं कर सकता, लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। तो अगर कल नॉन फार्म पेरोल इसके ऑपोजिट अगेंस्ट में आता है तो बेटर है, आपको एक रिट्रेसमेंट मिलेगा, उससे पहले भी रिट्रेसमेंट मिल सकता है, लेकिन नॉन फार्म पेरोल उसके अगेंस्ट में आता है तो मेरे ख्याल से उसकी स्पीड जो है, उसका टारगेट जो है वो थोड़ा कम हो सकता है, तो शायद 1:1.5 से हमको चेंज करके 1:1 पे आना पड़ेगा, वहां पर हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो जाए टारगेट, ये पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी ये पूरा डायरेक्शन ही रिवर्स हो जाए बेस्ड ऑन ओनली नॉन फार्म पेरोल, ये मेरे हिसाब से मुश्किल है। ठीक है, तो जब पॉलिसी आती है तो पॉलिसी में बाकी सब चीजें आप डिस्काउंट कर दो, उसको छोड़ दो और सिर्फ पॉलिसी पे फोकस करो तो चलता है। ठीक है, तो अभी 1.0826 का लेवल है जहां पर आप थोड़ा वेट करें, थोड़ा एंट्री के लिए बेटर वेट करें। यहां से अगर आप एंट्री करोगे तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्रेड हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपके फेवर में नहीं रहेगा, तो मेरे ख्याल से वेट करोगे वो बेटर स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। और पॉलिसी का इफेक्ट जो है वो हफ्ते से लेकर 10 दिन चलता है, तो नेक्स्ट पूरा वीक आपके पास है ट्रेड करने के लिए, तो एक बेटर रिट्रेसमेंट मिल जाए, बेटर नीचे मतलब प्राइस नीचे मिल जाए तो और अच्छा है आपके लिए ट्रेड करने के लिए, राइट? सो दिस इज हाउ वी विल अप्रोच दिस ट्रेड। यस, अभी आपको कोई डाउट्स हैं? मैं चैट बॉक्स तो मैंने चेक किया है, आई थिंक मोटा मोटी व्हाटएवर आप सबने बताया वो हमने डिस्कस किया ही है, लेकिन फिर भी आपका जो भी डाउट है आप बता सकते हो, तो वी कैन डिस्कस दैट, वी कैन कवर दैट। एंड आई होप कि आप सबको मजा आया होगा पॉलिसी का एनालिसिस करने में। टोन जो है वो पकड़ना थोड़ा सब्जेक्टिव काम है, लेकिन फिर भी आपको अपने जजमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा, अपने जो एनालिसिस है उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा। गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन ट्रस्ट योर एनालिसिस, फॉलो द प्रोसेस, होल्ड द स्टॉप लॉसेस टाइट एंड आगे बढ़ो। एटलीस्ट आपका एक्यूरेसी रेशियो अगर 70% है तो भी बहुत अच्छा है, 80% तो इज टू गुड। अगर पॉलिसी में 70% एक्यूरेसी रेशियो रहता है फिर भी आप अल्टीमेटली डिसेंटली अच्छा प्रॉफिट ही बनाओगे ओवरऑल। सो यस, हमको कोशिश करनी है एनालिसिस करने का और जो भी मिले उसके बेस पर ट्रेड लेना है। सो आई ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड पॉलिसी, मतलब पॉलिसी के बेस पर। सो यस, आई थिंक यस, okay, Dr. Manjeet Sodhi ji is saying yes, thank you Manjeet ji. I think Manjeet ji is from Ahmedabad, if I'm not mistaken, is कोई एक बैच से हैं आप मंजीत जी? मुझे याद नहीं आ रहा है, I'm really sorry, but okay, so भावेश भाई, यस भावेश भाई मुझे ध्यान में है, आई थिंक ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट, ऑनलाइन बैच से हैं और आई थिंक यस मुझे याद है। और स्मिथ, यस स्मिथ इज आस्किंग ड्यू टू opposing news of NFP. Okay, Manjeet ji is saying he's from UAE. Okay, sorry, then मैं कोई और आपको बताया, I was mistaken with someone else. ठीक है, मेरे समझने में गलती हुई। Yes, so yes, Smith is asking due to opposing news of NFP should we modify our entry and trail SL?
ओके, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए या नहीं, और एंट्री को मॉडिफाई करना चाहिए या नहीं? आई थिंक एंट्री के लिए लेवल्स तो बराबर है। दो लेवल है करंट लेवल से आप देखोगे तो एक एंट्री आपको 50 पिप नीचे है और दूसरी एंट्री आपको करीब करीब 100 एंड 130 पिप्स नीचे है, तो उससे ज्यादा फिर मॉडिफाई क्या करेंगे? तो मैं तो बोलूंगा कि आप अगर थोड़ा न्यूज ऑपोजिट साइड पे आईएनएफपी का तो अच्छा है, तो आपको एंट्री मिल जाए, वरना शायद एंट्री मिले या ना मिले, या पता नहीं दोनों एंट्री मिले कि नहीं मिले। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो चेंज करना चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की भी जरूरत नहीं, स्टॉप लॉस भी डीप इनफ है, काफी इनफ है। सिर्फ अगर एक चीज जो कोई चेंज करनी पड़ेगी तो हो सकता है कि आपका जो टारगेट है वो 1:1 पे लाना पड़े, ऐसा हो सकता है 1:1.5 के बदले। ठीक है, उतना सिर्फ आपको चेंज करना पड़ सकता है, उससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़े मेरे हिसाब से, राइट? सो आई थिंक दैट्स इनफ। एंड यस, सतीश जी, थैंक यू। यस सतीश जी, ऑल राइट। यस, गोपाल भाई, थैंक गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। धर्मेश भाई, सर एडवांस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं? एडवांस लेवल पर एंट्री कर सकते हैं मतलब धर्मेश भाई मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। अभी के लेवल बोल रहे हो आप, एडवांस इज इनकी करंट लेवल पे? ओके, मंजीत जी सिंह, आई एम फ्रॉम February bootcamp TFU, originally from Jalandhar. Okay, yes. हाँ, yes, I thought so कि मैंने आपका नाम कोई बैच में तो मैंने नाम पढ़ा है आपका। yes, मैं वो गलती कर गई, मैंने आपको अहमदाबाद से सोचा। यस, अहमदाबाद से कोई एक और डॉक्टर थे जो मेरे साथ बीच में टच में थे, तो आई थॉट दैट इट वाज यू, बट हाँ, यस। ओके, सो आई होप दैट योर ट्रेडिंग इज गोइंग गुड मंजीत जी, एंड आई होप इट इज हेल्पिंग यू जो आपने सीखा है। तो धर्मेश भाई आपका क्या एग्जैक्टली है, मतलब आप बता रहे हो कि नो दैट्स नॉट व्हाट यू मेंट, आप कुछ अलग बताना चाह रहे थे, सो प्लीज थोड़ा डिटेल में लिखिए तो समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यस योगेश भाई, थैंक यू। सो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, काफी लंबे टाइम के बाद मिलके अच्छा लगता है। जैसे अभी मंजीत जी ने बताया कि इज फ्रॉम फेब्रुअरी बूट कैंप, सो आई थिंक वो लास्ट फेब्रुअरी का बूट कैंप होगा, फेब्रुअरी 2024। सो उसको 1 साल हो गया। सो यस, 1 साल के बाद मिलके अच्छा लगता है। सो आपकी ट्रेडिंग जहाँ पे भी चल रही है, जैसे भी चल रही है, अगर आपको कोई सपोर्ट की जरूरत है, आपको कहीं पे सजेशन हेल्प की जरूरत है, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। आप कभी मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, यू हैव माय नंबर। एंड अगर आपको, मेरे एक प्रोफेसर हुआ करते थे जब मैं कॉलेज में था, तो मुझे अक्सर एक बात कहते थे कि व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, सेंड मी अ पोस्ट कार्ड एंड जस्ट टेल मी दैट यू आर हैप्पी, सो इट विल मेक मी हैप्पी। सो वैसे ही अगर आप कुछ भी सीखे हैं और कहीं भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको मजा आ रहा है, सो जस्ट सेंड मी अ मैसेज, ड्रॉप मी अ मैसेज दैट यू आर हैप्पी। और यस, आप अच्छा कर रहे हैं तो मुझे जान के भी अच्छा लगेगा, राइट? सो आई फील गुड। मेरा नंबर तो आपके सबके पास है ही, राइट? आई कैन ऑल्सो शेयर माई ईमेल आईडी, तो कोई आप मुझे मेल भी कर सकते हो, दैट्स ऑल्सो फाइन। सो माई ईमेल आईडी इज info, और अगर मैं दूसरा ईमेल दे देता हूँ, पर्सनल ईमेल आईडी देता हूँ, nirlepksha@gmail.com। ठीक है, निर्लेप शाह मेरा नाम है, उसमें सिर्फ बीच में के डाल दीजिए। सो nirlepksha@gmail.com, दैट्स माय ईमेल आईडी। सो जस्ट राइट मी अ मेल एंड दैट विल मेक मी हैप्पी, और यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज एज वेल, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अच्छा लगता है सुन के जब अच्छा करते हैं लोग, राइट? सो यस, नाइस टू सी यू। ट्राइबल फिज, आई एम नॉट सॉरी, आपका नाम, आई एम सॉरी, आपका नाम क्या है? आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज यू। ट्राइबल फिज, कौन से बैच से हैं आप?
व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करता हूँ, धर्मेश भाई बोल रहे हैं। ठीक है धर्मेश भाई। ओके चंपक भाई, चंपक हजारिका, यस यस यस। आई थिंक आज आपने ही मैसेज किया था मुझे चंपक भाई। चंपक जी, आई थिंक यू मैसेज मी टुडे इटसेल्फ। आपका ही मैसेज था ना आज व्हाट्सएप पे? यस, हाँ, यस यस यस। जलाराम भाई सेइंग नाइस थॉट्स सर फॉर पोस्ट कार्ड। यस, पोस्ट कार्ड भेजिए, कोई बात नहीं, आजकल तो पोस्ट कार्ड आती नहीं है वैसे भी। ये तो हमारे प्रोफेसर कहा करते थे हमसे, बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेसर थे। ही यूज्ड टू टेल कि व्हेनेवर यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ और हैप्पी इन लाइफ, जस्ट सेंड मी अ पोस्ट कार्ड एंड टेल मी दैट यू आर हैप्पी। यस, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। यस चंपक जी, मैंने आपका जो क्वेरी है मैंने टीम को पास ऑन कर दिया है। आई थिंक आज ही आपको कॉल आ जाना चाहिए। आई जस्ट टेक अ फॉलो अप इफ दे हैव कांटेक्टेड यू और नॉट। ठीक है, सो यस वी विल सी। ऑलराइट, सो आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया है सब कुछ। So we'll conclude the class, we'll conclude the live today, and I hope कि आप सबको मजा आया होगा। ऐसे ही जुड़ते रहिए हमसे और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए कि कैसे हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि शायद उनको भी इस चीज का फायदा मिले। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एज वेल। शेयर, आप ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स लवर्स हैं हमारी तरह ही, और ऐसे लोग जो फॉरेक्स के लिए पैशनेट है, एंथुसियास्टिक है, right? So this information can help them as well, and you also take advantage of this information. You also trade live with us. I like to trade live with you guys. I enjoyed it thoroughly. I hope you guys enjoyed it thoroughly too, and see you once again tomorrow and non-farm payroll data, and we'll keep coming live more and more times in this month, and keep trying कि आगे से आगे और भी live आते रहूं आप सबके साथ। इस महीने में यूएस की पॉलिसी भी है, तब भी आऊंगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, सारी पॉलिसीज लाइंड अप है। So I'll try to come live in all the policies as many times as possible. Okay, till then, enjoy. Bye bye. See you.